Good morning to everyone. How are you all? Fine, good. Very good. कैसे चल रही है पढ़ाई? Study, preparations? Good. Going through the last year's paper? Last year's answer writing? कर रहे हैं? There is your friend back from. So we are doing Maldives, na? India Maldives. Any questions? हाँ बताइए. Dialogue. हाँ अभी देखिए रिसेंटली जून में इंडिया इंडस ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी का ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से जजमेंट आया. So it is only through dialogues can be resolved. Best way. Forcefully या force use करना या कोई extreme steps use करना is not going to resolve. So the dialogue it can be resolved. ठीक है? Anything else? तीसरा देखिए अभी तक resolve नहीं हुई है. That would be resolved through dialogue only. ठीक है? सब ठीक? After very long time. जम्मू घूमने गए थे? जम्मू में भी तो गर्मी काफ़ी हो रही है. गर्मी अच्छी होती है. तो चलिए वी आर डूइंग द इंडिया मालदीव्स. Now right, so we have written developmental, right? The last. आज किधर हैं सब और लोग? Write down. Next heading, economic and development cooperations. Development cooperation. अच्छा, before starting writing, answer some question. Why Maldives is important? Because of tourism, Maldives is important for India. ईस्ट एशिया से नहीं, उस साइड से जो भी ट्रेड आता है, साउथ ईस्ट एशिया से. और यस, तो मालदीव जो है ना, हमने देखा है कि मालदीव जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है. इट इज लाइंग इन द स्ट्रेटेजिक रीजन, जहाँ पर स्वेज कैनाल से जो भी ट्रेड होकर आ रहा है वो यहाँ से होकर गुजर रहा है. यस और नो? दिस इज स्वेज कैनाल, लार्जेस्ट ट्रेडिंग रूट, मैरीटाइम रूट. और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से भी ट्रेड होकर यहाँ से गुजर. देयर आर टू मेजर ट्रेड रूट्स, मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, मलक्का एंड स्वेज कैनाल. तो दोनों का मीटिंग ग्राउंड इन बिटवीन हम कह सकते हैं, लाई इन बिटवीन और इन द पाथ. तो बिकॉज ऑफ दैट
मालदीव इज इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली, इट्स लोकेशन, ठीक है। सेकंड, मालदीव जो है वो नेबरहुड में, इंडिया का जो नेबरहुड में है वो लक्षद्वीप और केरल से बाउंड्री है उसका, आई मीन प्रॉक्सिमिटी है, बाउंड्री नहीं बट प्रॉक्सिमिटी है। इंडिया अगर मालदीव से कनेक्ट हो रहा है तो वो थ्रू लक्षद्वीप एंड केरल। एंड इफ सपोज दैट द पॉलिसी ऑफ चाइना ऑफ बिल्डिंग BRI, बोर्ड एंड रोड इनिशिएटिव, अगर स्कीम में बात करें तो चाइना इज बिल्डिंग अ मैरीटाइम सी रूट to get entry into this, right? And suppose that if China use a Maldivian as an port or its base, अगर मालदीव में चाइना अपना नेवल बेस बना ले, मिलिट्री बेस बना ले, तो इट विल बी अ डायरेक्ट थ्रेट टू इंडिया कि लक्षद्वीप और केरल वाला इलाका में वहां से इजी टारगेट करना होगा इंडिया को। So because of these two, one because of the trade routes and one because of the that the area should not be used as an base, इसलिए इंडिया के लिए मालदीव इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यस और नो, दिस वी हैव डिस्कस। तो इंडिया वहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है अलॉन्ग विद द डेवलपमेंटल, आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। एंड वी नो दैट द मालदीव्स आर ए वेरी स्मॉल स्कैटर्ड आइलैंड ऑफ 1200, छोटे छोटे, और एशिया में सबसे छोटा आइलैंड और सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड भी है मालदीव, राइट। एंड मालदीव्स इकोनॉमी आर मैरीन एंड ऑल्सो टूरिज्म इकोनॉमी, अगर हम वहाँ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तब, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मालदीव, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मालदीव इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो एंड यहाँ पर वो किस लिए किया है, यहाँ बेस किस लिए बनाया है? द थर्ड रीजन इज दैट सोमालिया में पायरेट्स का जो भी यहाँ पर आपका ट्रेड रूट है, ये अरेबियन सी में पायरेट का इशू और कन्फ्लिक्ट बहुत होता है यहाँ पर। सोमालिया में जो पायरेट्स होते हैं वो हाईजैक कर लेते हैं जितने भी आपके गुड्स की ट्रेडिंग है, उसको सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पर स्टेशन है एडमिनिस्ट्रेशन टू सिक्योर, टू गिव सिक्योरिटी टू द ट्रेड रूट्स, ठीक है। बिकॉज मालदीव is in middle, in fact it is in middle of these two trade routes of Suez Canal and Malacca Strait, जो दो important maritime trade route है जहां से world का trade route govern होता है। through the Pacific Ocean it comes through Malacca and through Mediterranean and European it connects to the Suez Canal। तो दोनों आकर के मालदीव आपके अरेबियन सी के पास मालदीव में ये होते हैं। So this is importance of Maldives for India. This we already have discussed, right? चलिए, now we are writing economic and development cooperations. First point, economic and development cooperations between India and Maldives. India is a leading development partner India is a leading development partner and has established many of the leading institutions of Maldives. Like Indira Gandhi Memorial Hospitals,
इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल. सेकंड, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी, faculty of engineering technology. Next is faculty of hospitality and tourism studies. Faculty of hospitality and tourism studies. Tourism studies, hospitality and tourism studies. ठीक है. Next point, India and Maldives signed a trade agreement in 1981. हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? बस तो मतलब होटल स्टैब्लिश करना, रिसोर्ट स्टैब्लिश करना इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी. टूरिज्म प्लेस ये है द टूरिज्म स्पॉट, तो उसके लिए स्टडीज सेंटर खोली टू हॉस्पिटैलिटी एंड जैसे होटल मैनेजमेंट को इज ऑल रिलेटेड टू टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी. यस और नो? तो फॉर द टूरिज्म सेंटर इट ऑल्सो बीन ओपन बाय द इंडिया इन मालदीव. ठीक है. तो India and Maldives signed an trade agreement in 1981. Through which the bilateral trade stood at rupees 700 crore rupees. Trade stood at 700 crore rupees. 700 crore rupees. Next point. India has provided $100 million standby credit facility. India has provided $100 million standby credit facility. Standby credit facility to Maldives, which includes long-term loans, long-term loans and revolving credit for trade. And revolving credit for trade. Trade. SFC क्या है? Standby SCF, standby credit facility. And short-term loan. मतलब it's a kind of credit given which is for the short time and long time uses for the less interest. हाँ वो फिक्स. हाँ. Next, another $40 million line of credit offered by government of India. Another $40 million $. So his dollar has been in hegemony. International trade अभी इसमें हो रहा है. China now try to break it. India is also making. Sorry. हाँ. तो इंडिया भी चल रहा है, अभी चल रही है जहां हम आपस में अपना रसिया के साथ भी चल रहा है विद द रूबेल एंड रुपीस में जहां पेमेंट कर सके, रेमिटेंस हो, राइट. तो थ्रू दिस इट विल ब्रेक द हेजेमनी ऑफ यूएस डॉलर. बट रुपीस में किया ना पहले, आप देखिए 700 करोड़ रुपीस, उसको क्रेडिट फैसिलिटी दिया विद इन डॉलर. नाउ देयर इज बीन गोइंग ऑन दिस. See, why dollar is accepted? Because of the trust and belief. ठीक है. तो trade in your own currency, it needs to be have a faith at the international कि आपका पैसा चलेगा, कोई एक्सेप्ट करेगा. मान लीजिए इंडिया में
इंडियन करेंसी में ट्रेड कर लिया और उसके बाद उसने किसी और के साथ ट्रेड किया, दे आस्क फॉर द डॉलर नॉट फॉर द रुपी, तो कन्वर्टिबिलिटी रेट से उसको कम पड़ जाएगा, राइट। तो यूएस डॉलर इज वन ऑफ द और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट करेंसी इन द वर्ल्ड। दैट्स वाई देखिए हम इंडिया में हमेशा डॉलर के रेट पर ही फोकस करते हैं, यूरोज पे फोकस नहीं करते। वो यूरोज और भी महंगा है लेकिन उस पर कभी बात नहीं होती है। डॉलर 80-85 रुपीज़ के लगभग है, अराउंड दिस। हम हमेशा उस पर अपने क्रेडिट को एनालाइज करते हैं, मेजर करते हैं इंडियन करेंसी को कि डॉलर महंगा हो रहा, सस्ता हो रहा, बिकॉज वी आर ट्रेडिंग विद द वर्ल्ड और वर्ल्ड इज ट्रेडिंग इन टर्म्स ऑफ डॉलर। और यहाँ यूएस डॉलर, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉलर। ऑस्ट्रेलियन भी डॉलर चलाती है, सिंगापुर भी डॉलर चलाते हैं। Again, certain countries have also like Nepal currency is also rupee, Pakistan currency is also known as rupee, Indian currency is also known as rupee. तो अगर रुपी ट्रेड होगा तो वहाँ इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी, INR. You're getting the point? Because it has been facilitated on the basis of Indian currency. तो वर्ल्ड में डॉलर का इंपॉर्टेंस बहुत होने की वजह से लोगों का विश्वास है, the world in the countries in the world are been very trusted with the dollar, कि किसी से भी कहीं भी किसी के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। every country has its own currency. नहीं और नहीं ऐसा नहीं है यूएस से ही स्टार्टेड, उससे नहीं वो तो बहुत आरबीआई से मतलब नहीं, दैट इज अ सेंट्रल बैंक। करेंसी तो बहुत पहले स्टार्ट चल रही है ना, पेपर करेंसी शुरू हुई है चाइना से, बट उससे पहले जो टोकन करेंसी, जो आप कॉइन देख लेते हैं, सील देख लेते हैं, तो वो बहुत एंशियंट पीरियड से है। द मेन रीजन इज दैट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर से पहले ड्यूरिंग दिस 1900 और इन 19th century or 20 end of the 19th century and beginning of the 20th century, the trade mostly were done by the European. इंडिया भी ट्रेड अगर कर रहे थे तो यूरोपियन के थ्रू ही कर रही थी ना, इंडिया तो खुद नहीं कर रही थी। इट मीन्स ट्रेड इज डन बाय द यूरोपियन, सो दैट विल बी डन इन यूरोज। बट एज द आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हेन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हेन यूएस बिकम इन अ लाइन ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर, इकोनॉमिक हेजेमनी, क्योंकि उसने फंडिंग शुरू किया वर्ल्ड वॉर में यूरोप को, सेकेंड वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ दैट द 29 डिप्रेशन हैज केम, so it has established that ट्रेड एंड इकोनॉमिक हेजेमनी। सुपर पावर होने की वजह से लोग, कैपिटलिस्ट होने के बाद पैसा है उसके पास, तो लोग उसके साथ विश्वास करें, इन्वेस्टमेंट हुआ। बट अभी भी कंट्रीज का विश्वास उस पे है, बट नाउ द ट्रेंड हैज स्टार्टेड वेयर एन कंट्री बिटवीन देम आर स्टार्टिंग टू ट्रेड इन देयर ओन करेंसी, एक्सेप्टेंस। वी आर एक्सेप्टिंग कि हमारे रुपीज को यूएई या मालदीव एक्सेप्ट कर ले, तो मालदीव इन रिटर्न ये भी तो चाहेगा ना कि दैट इंडिया, वी शुड आल्सो पे इंडियन इन आवर ओन करेंसी। हमें भी तो मालदीवियन करेंसी को एक्सेप्ट करना होगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So there is a trust issue na. So once India will develop, or then like China, yuan, now China has mostly moved into the payment of yuan. Yuan, it's currency, China currency, they have started. Russia has also been long time using ruble, well its currency, ठीक है। UAE, फ्रांस, मेनी कंट्रीज देयर इज अ टॉक वन। ईरान के साथ बहुत पहले बात चल रही थी इंडिया करेंसी में, बट सैंक्शन की वजह से वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। सैंक्शंस पनिशमेंट, सैंक्शन मीन्स इट कैन बी अ मिलिट्री सैंक्शन और एन इकोनॉमिक सैंक्शन, उन पर रोक लगाना, इकोनॉमिक असिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कि ईरान और अफगानिस्तान और ऑल दिस दे हैव टर्न इनटू द मिलिटेंट, और रसिया दे हैव वेज वॉर, सो दे हैव पुट सैंक्शन, अब आपके ऊपर हम इकोनॉमिक सैंक्शन लगा, मीन्स नन ऑफ द नेशंस इज गोइंग टू बाय यू फ्रॉम एनीथिंग। आप ट्रेड नहीं कर सकते, इकोनॉमिक सैंक्शन है, आप मार्केट में बेच नहीं सकते, दिस इज इकोनॉमिक सैंक्शन, बेच नहीं सकते, यू कैन नॉट सेल
वेज वॉर दैट इज रिलेटेड टू पेमेंट, सैलरी, वेजेस जो आते हैं, गेटिंग दिस इज सैंक्शन. और मिलिट्री सैंक्शन लाइक ईरान, अफगानिस्तान, वियतनाम, जहां मिलिट्री के थ्रू अमेरिका ने कंट्रोल किया. इज इट क्लियर? तो सैंक्शन मीन्स बेसिकली लिटरल मीनिंग में टू गिव अ पनिशमेंट इन टर्म्स ऑफ कि आपको इसने आपने ये काम किया इसलिए आपके हम ऊपर ये सैंक्शन, वी आर इम्पोजिंग सैंक्शन ऑन, वी आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन यू, ऑन योर ट्रेड. हाँ, दैट इज टेम्पररी, यू कैन नॉट परमानेंट नहीं लगा सकते ना. इज इट क्लियर? तो राइट डाउन that under a new line of credit of 40 million US dollar, क्या लिखा आपने? Another 40 million dollar by government of India under Overseas Infrastructure Alliance. The Overseas Infrastructure Alliance of India, under काट दीजिए, Government of India, comma, the Overseas Infrastructure Facility Alliance, Infrastructure Alliance of India has given a contract to construct have been given a contract to construct 485 housing units in Maldives. (485) housing units in Maldives. Next point. In 2021, AFCON, AFCON, sorry, not AFCON, 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 AFCON. It is an Indian company. Now it's visible. AFCON. It's an Indian company. Signed a contract for the largest ever infrastructure project in Maldives. AFCON, an Indian company signed a contract for the largest ever infrastructure project in Maldives. Project in Maldives. ठीक? Infrastructure project in Maldives. Infrastructure, building, road, shipment, कुछ भी. Infrastructure में सब कुछ आ जाते हैं, right? Hotels, tourism, resort, building, all these are infrastructure. Dam or electricity or road building, pool, these are infrastructure. ठीक है? Now this is economic and developmental cooperations between India and Maldives. Now write down the recent development. And India's concern. Recent development and India concern. This is related to how the China has, or the relations established by China in Maldives, which has how it will affect or win on India Maldives relations. ठीक है? Write down. For China, Maldives is a key link or important link. Maldives is an important link for China, comma, Maldives is an important link, L-I-N-K, link, in its maritime Silk Route or Silk Road plan under BRI initiative. Maritime Silk Road plan, road, कुछ भी लिखे, road plan under BRI initiatives, Belt and Road Initiative.
या इट विल कम. अभी हम वहाँ पर हैं ही. हाँ, दैट इज फ्यूचर. व्हेन वी विल मूव टू दिस इंडिया एंड यूरोप रिलेशंस, इंडिया एंड अफ्रीका, तब हमें बेल्ट रोड नहीं मिलेगी. लेकिन वी आर इन द एशिया, सो वी हैव टू फेस दिस. yes, China is doing its rigorously the Belt Road Initiative process. Next, in 2017, Maldives signed a free trade agreement with China. Yes, India nahi. In 2017, Maldives signed a free trade agreement with China. अभी ट्रेड एग्रीमेंट आपने लिखा ना. अभी चाइना क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मालदीव के साथ एग्रीमेंट है ना, लिखेंगे हम अभी. while endorsing, comma, China with China, comma, while endorsing, ENDORSING, its maritime Silk Road project, which has caution, CAUTION, caution India for its strategic implication in Indian Ocean. Caution, CAUTION, सावधानी. India for its strategic implication in the Indian Ocean. In the Indian Ocean. कैसे कर सकता है? How the it's the BRI is an agreement between China and Maldives has cautioned India. Done India. अगर ये build बन गया, अगर ये हो गया, that means the China is going to use the Maldives as a base. Trade पे control. Trade to the nearest territory of India, Lakshadweep, Kerala, can be easily get control and attacked by the China. Yes or no? Then it will be also holding the Sri Lanka's, right? क्या नहीं, यहाँ पर अगर बनाता तो इंडिया को खतरा है ना अपने इंडियन ओशन. ट्रेड मोनोपोली आ जाएगी, सोवरेनिटी, फिर उसके साथ चाइना के साथ डील करना पड़ेगा. चाइना विल कंट्रोल, होल्ड कंट्रोल दिस. इट विल एनसर्कल द चाइना इंडिया. मेजर ट्रेड रूट है ये, वो अफेक्ट करेगा वो भी. सी रूट चाइना का ही है. सी रूट सिल्क रूट, सी रूट नहीं, सिल्क रूट. हाँ, दिस इज द एंशियंट ट्रेडिंग रूट ऑफ चाइना. फ्रॉम सी, यहाँ से चलते थे ऐसे यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, एंड फ्रॉम अपर साइड इट इज एंटर इनटू दिस फ्रॉम हिंदू कुश, और वो आपका काराकोरम पास, यू नो द हिंदू कुश माउंटेन, द रीजन ऑफ हिंदू कुश माउंटेन. तो वहां से पासेस करके वो सेंट्रल एशिया और यूरोप में एंटर करती थी ट्रेड. Yes, it will hamper the world trade facility. It will hamper the world trade agreement once it been developed. So it will become under the monopoly of China. ठीक है, चलिए. Implications. Next point. In 2012, relation between India and Maldives. In 2012, relation between India and Maldives came under strain, 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 after Male, MALE. So you can, this is pronounced in the terms of Maldives, Male.
but in terms of general English, male. Okay, so Male had terminated the agreement. After Male has terminated the agreement with GMR in 2010. GMR in 2010. GMR in 2010 for the modernization of Ibrahim Nasir International Airport. Ibrahim Nasir International Airport. इसका फुल फॉर्म नहीं है. दिस इज अ कंपनी विच डेवलप्ड एन एयरपोर्ट. व्हेन Nasir NASIR International Airport. Yes, this GMR is a company. जब भी आप whenever you visit to IGI airport ना, so you would see a GAAR infrastructure, car infrastructure, GMR infrastructure. So these are a company that indulge into the development of airports. हाँ, the GAR and GMR are companies who indulge into the development, management, development, operational. This IGI has been operational or been through this GAR, GAAR. आप देखिएगा, you will come to know. So this is a company. ठीक है? Next point. The airport expansion project. The Ibrahim Nasir International Airport expansion project was given to the Chinese company तो इंडिया के साथ रिलेशंस एग्रीमेंट को तोड़कर चाइना को दे दिया GMR. So this become the issue of contention between the two countries. The airport, that is Ibrahim Nasir International Airport expansion project, was given to Chinese company. So GMR has challenged the government's decision. Challenge the decision, right? अब ब्रैकेट में लिखिए the reason Maldives has quoted to cancel the agreement. हाँ, जो उसने कॉन्टैक्ट ये करके आप लिखे ब्रैकेट में, राइट डाउन इन द ब्रैकेट द रीजन वाई, द रीजन cited by Maldives to cancel the contract. So it says the contract was illegally awarded by the President Nasheed. What you are writing, you are getting or not? The Maldives has cancelled the contract of GMR, right? Now the reason they have cited कि क्यों कैंसिल किया है, ये थोड़ी बोले हम चाइना के पास जा रहे हैं. I'm coming. So they have cited the reason. So you write a reason of cancelling the contract. So they have cited that the contract was illegally awarded by the President Nasheed, NASHED, NASHEED, NASHEED, NASHEED. Sorry, NASHEED, नाशीद. ये प्रेसिडेंट का नाम है वहां का, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुई थी GMR. ठीक, एनी डाउट? राइट, नेक्स्ट पॉइंट. सॉरी, ये पीरियड में ही चल रहा था. आई मीन ड्यूरिंग दैट पीरियड इट वाज गोइंग ऑन फॉर द लॉन्गर पीरियड.
हाँ टर्मिनेट कर दिया, रीजन ये दिया, और टर्मिनेट करने के बाद फिर वो प्रोजेक्ट चाइना को दे दी। और कमिंग the reason, this is reason cited by Maldives to cancel the contract. When they have cancelled the contract, so they have approached how you can do and why you are doing this. So they have cited the reason that this was illegally given to you by the President Nasser. Matlab they accepted as a corruption or charges. So now we are cancelling this contract. And after cancelling the contract was given to the Chinese. हाँ, but that is by given by that time president illegally. In accept, हाँ तो reason क्या कर सकते हैं? Are getting my point? आप कुछ कह रही थी? Contract ना, so they have cancelled because of that they have, the Nasid has used an illegal means, मतलब corruptions. It is a basically charge of a corruptions. कि आपने कुछ पैसे दे करके ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगली आपको दिया गया, तो हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं. And after that they have given this to the Chinese government. So GMR has challenged this decision, cancelling of the contract in the arbitrary court. And GMR has won the it has given in the favor of GMR. Next point. थोड़ा पेशेंस रखिए तो सारी स्टोरी समझ में आ जाए. So you have written the reason, you have written, and you have written that the GMR has challenged, right? Now GMR won arbitration against the Maldives at Singapore based. GMR won arbitration against the Maldives at Singapore based International Arbitration Tribunal. Singapore based International Arbitration Tribunal, which awarded $270 million. बहुत स्लो लिख रहे हैं आज. आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, अब हर वर्ड पे फंस रहे हैं. आर्बिट्रेशन मीडिएशन एक तरीके का, ट्रिब्यूनल इज अ काइंड ऑफ जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी विच फंक्शंस एज एन मीडिएटर. हाँ, जो उसको डिसाइड करता है एंड इट्स गिव इन द कंसेंस. मीडिएशंस जानते हैं ना. आर्बिट्रेशंस में डिस्प्यूट, इट्स अ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इज एन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म. जो डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व एमिकेबली, म्यूचुअली बैठ करके उनके दोनों के स्टोरीज को सुन करके हम काम कर फैसला देते हैं, एंड दैट वुड बी बाइंडिंग. ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया दैट टुडे देयर इज अ अवार्ड ऑफ इंटरनेशनल इंडस वाटर ट्रीटी का आर्बिट्रेशन के अंदर में, एंड द अवार्ड इज फाइनल एंड दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड. दिस इज अ रिसेंट डेवलपमेंट. इन जून इट इज बीन गिवन जजमेंट अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट. वो बना रहे जो आपको डैम जो बन रही है, नहीं उस पर रोक है अभी, दैट इज अ ट्रीटी. हाँ पे जो डैम बने, दैट वी विल डू. हाँ राइट, नहीं वो इंडिया में ही है, इंडिया में ही बना रहे हैं, पाकिस्तान जाकर नहीं बना रहे हैं. बट इज हाँ बस इसके बस वी विल डू. ठीक है, एंड अवॉर्डेड $270 million as a compensation to the company. $270 million as compensation to the company. Contract चाइना के पास ही, right? Next point. India is unease UNESY with Maldives relation with China and also believe that the new law passed by Maldives
the law passed by Maldives allowing absolute foreign ownership of land passed by Maldives, comma, allowing absolute foreign ownership of land on the condition land ownership of land on the condition that interested parties would make a minimum investment. Interested party would make a minimum investment of $1 million. Minimum investment of $1 million and reclaim 70% of land from the sea. Reclaim 70%, 70% of land from sea, which benefit China in expanding its foothold in Indian Ocean. Which benefit China in expanding its foothold, its hold or control in the Indian Ocean. Foothold, control, expand. In expanding its foothold, control in the Indian Ocean. मतलब आप $1 million दीजिए. Foot, FOOTHOLD, foothold. Foothold means control of 70%. $1 million दीजिए और 70% लैंड आपका. They are selling basically or invest 1 million and 70% of land from the sea. So this will give China's benefit. वो तो उसी चक्कर में है ही चाइना, तो इससे इंडिया के लिए खतरा है फिर. दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ. नेक्स्ट पॉइंट. India's concern is that China, with its strategic ally Pakistan, India's concern is that with its strategic allies Pakistan, concern is that with its strategic allies Pakistan, its strategic ally Pakistan would use the Maldives as a strategic choke point for India. Would use Maldives as a strategic choke point for India. CHOKE, choke point. Choke point, POINT for India. Choke point बताइए. चोक, किसी को चोक कराना, गला दबाना, दैट्स चोकिंग. यहाँ अगर यूज करेगा, दिस विल प्रेशराइज, चोक द इंडिया, मींस दे विल होल्ड कंट्रोल ऑफ दिस एरिया. एक मिनट. हाँ भाई, यहाँ से अगर यहाँ पर चाइना का कंट्रोल है, पाकिस्तान इज एन स्ट्रेटेजिक एलाई ऑफ चाइना. चाइना बेस पे पाकिस्तान अपना शिप या बेस, नेवल बेस, मिलिट्री बेस स्टैब्लिश कर सकता है, एंड थ्रू दिस इट विल होक इंडिया. यहाँ से लक्षद्वीप एंड केरल, थ्रू केरल चोक पॉइंट, राइट. इंपॉर्टेंट विद इंडिया. हाँ,
they're not, हाँ सी कंट्रोल में, सी में लैंड, हाँ ठीक है, में मतलब दैट जो टेरिटरी ऑफ सोवरेनिटी, लैंड सोवरेनिटी होती है, एक मैरीटाइम सोवरेनिटी, तो दे आर गिविंग द मैरीटाइम सोवरेनिटी ना, 250-200 नॉटिकल माइल्स जो हमारे अंडर में है, गिव ऑन दैट। सी, this is a policy, it's not a policy of Maldives as a whole. You can understand through this, whenever the government changes in this, and these all areas, ये बात कर लीजिए आप, ये बात कर लीजिए, राइट, आप यहाँ फिर आप बात कर सकते हैं दिस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, all this, these are the area which having an unstable government, always you can witness an military coup over there, अक्सर होता रहता military coup यहाँ पर, तो government change होते रहती है, तो some governments are in favor of India, some governments are in favor of China. This is a, we have seen the foreign policy will is directed through the or changes as the government changes, the policy changes. अमेरिका में भी ऐसा ही है, अमेरिकन गवर्नमेंट चेंज, व्हेन रिपब्लिकन केम दे विल बी इन फेवर ऑफ इंडिया, व्हेन डेमोक्रेटिक केम दे विल बी अगेंस्ट द इंडिया, getting my point, as soon as the government policy change, and that is a democratic government that coming into, and they will work accordingly to the democratic process, but in those area which is been sometime hold by the military through the coup, यहाँ अक्सर coup होता है, कभी प्राइम प्रेसिडेंट को जेल भेज दिया कोई आकर के, स्टेबिलिटी नहीं है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस मिलिट्री दे आर फेवरिंग, अच्छा इंडिया इज डूइंग दिस, अब नेबर के साथ ज़्यादा हमारा वो होता है, एक ह्यूमन नेचर है कि वी आर नॉट हैप्पी विद द नेबर्स, नहीं कैसे कैसे उसको कर देते हैं ये, समटाइम्स दे गो अगेंस्ट, समटाइम्स, अब जैसे देखिए जब भी कोई क्राइसिस होगी इंडिया विल हेल्प, राइट, बेनिफिशियरी वाटर एड दे देना, समथिंग, but after they recover from the crisis they will again change, so it's all depend upon the nature of the politics they are having, ये होता रहेगा morally, this is what the theory which we talk, a realistic and ideology, we cannot compel any nations, you cannot go with the China, आप ऐसा कैसे, they can make any law they want, yes or no, and we cannot interfere in them, our policy is that, so they, if they want, then they can also say we can give you land in $1, so they have made this law, so there is an, this is an will affect, ill affect the Indian interest, because once China hold the control of the Indian Ocean, the Arabian Sea, which is a major trade route, it is not only going China, India who is going to suffer, but the world trade will also suffer, it will attack the American hegemony, अब यहाँ से पास वही हो पाएगा जो चाइना चाहेगा, कंट्रोल इस रूट पर इंडिया का, चाइना का होगा, and this is the major trading areas ना, ये पूरा populations Arabian, that European nations, you're getting the point, अमेरिका को अगर एशिया में आना है तो दे विल कम थ्रू द पैसिफिक ओशन, वो रसिया से होकर के ऐसे ही आने वाले हैं वो, अब पूरा ऐसे तो घूम करके आएंगे नहीं, this will be a very long route trade, so they will come from the Alaska होते हुए, जापान के नीचे से होते हुए, they will come here, so they have to cross this, are getting the point, so this is, the policy will always be in the change, so we have the, every nation have to cope up with the government changes, इसलिए कभी कभी लोग try, the nations try to do this, the in the country, whenever the interested country, the government should come who is in favor of the interested country, अपना इंटरेस्ट बना रहे उसमें, राइट, तो चाइना वांट्स कि ऐसा कोई गवर्नमेंट आ जाए जो इंडिया के अगेंस्ट में और वो हमें दे दे, दे वांट दिस, अब यहाँ चाइना कंट्रोल, तो दिस एरिया विल आल्सो बी अफेक्टेड, अब श्रीलंका में भी होगा, अब वहाँ हम्बनटोटा पोर्ट बना ही रही है, कोलंबो पोर्ट बना ही रही है, हैव रिटन ऑल दिस, यहाँ भी बेस, यहाँ भी बेस, so you can imagine the hold, यहाँ साउथ चाइना सी बेस, हांगकांग बेस, ताइवान बेस,
Getting the point? So through it will be getting a control. So this has to be dealt with the dialogues. अब आप अटैक नहीं कर सकते कि ऐसा कैसा तुमने लॉ बनाया. We are going to which the America was using at initial stage. Gulf War हो गया, Vietnam War. We have seen one war हो गया. How you can incline towards the Russia. Orange agent याद है आपको? Orange agent in the Vietnam War. Orange agent, chemical orange agent by the America in the Vietnam War. When you will go, you this. I mean the revision. So this is done earlier. Now the world has opened up. Everyone has dependent. They have to deal with the diplomatically. तब भी अमेरिका यहाँ आना चाह रहा है. इंडिया भी अपना बेस बनाना चाह रहा है. इस BRI को इनिशिएटिव्स को India is trying to fail. At once India get control, and this is the only chance when India gets a control over the POK. Now it is important for India to get a control of POK. Once the POK come in that control of India, the BRI will fail. That is the only route through China is building CPC, China Pakistan Economic Corridor, is joining China to the Africa, Afghanistan, Central Asia. हमें अभी क्या करना पड़ता है वहाँ जाने के लिए? हम यहाँ से चलते हैं, पाकिस्तान हम जा नहीं सकते, यहाँ जाते हैं, शाहबार पोर्ट हम डेवलप्ड कर रहे हैं, फिर हम एंटर करते हैं अफगानिस्तान, ईरान, तब हम फिर सेंट्रल एशिया जाते हैं. Once we get a control of POK, we'll enter here directly to the Afghanistan. Road. Okay, Afghanistan and India having a border with at the Muzaffarabad POK. This is the only shortest border between Afghanistan and India. अभी नहीं है क्योंकि अभी POK में है. POK is under the control of Pakistan. So if India get a control of that, then it will hamper the BRI road, which China never wants. तो चाइना ये कभी होने नहीं देगा. तो लेकिन चाइना इंडिया पे उसके लिए हमला नहीं करेगा कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो. What it can do, it can build a pressure from outside. International institutions के through, infiltrations के through, disturbing its security, threatening the security. But directly they cannot interfere, na? You're getting the point? Abrogation of 370 has instigated the China to do action against India, but directly they were not criticized. And abrogation of 370, due to that, India has mostly, or you can say that at least it has tried to establish peace in the valley. Now there is G20 summit going. Possible tha pehle? Lot have changes. Now investment will come to this. What will happen? So these are the India using soft power. In Kashmir, restaurant, buildings, tourism, malls, these are the, and through this it will generate employment. तो एक बार अगर वहां पर employment आ गई, youth get employed, तो Pakistan cannot influence the people of Kashmir. And once the Kashmir issues will settle, I mean peace is established, it can withdraw its army, at least half, then get control of POK. So through this, India will have full control over this area. Now that China does not want. ऐसा हो गया तो POK ले लेगा, इनिशिएटिव फेल हो जाएगी. और अगर सपोज बाय एनी मीन्स इफ इंडिया गेट अ चांस टू होल्ड कंट्रोल ऑफ POK, तो फिर और उसका जो भी हो, चाइना विल नेवर हेल्प पाकिस्तान. फिर इंटरेस्ट ही नहीं है, की वजह से हेल्प कर रहा वो. और वो POK का पूरा एरिया पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, लाइक दिस. नहीं,
Chin is under control of China. Aksai Chin is in the northeast. I am talking about the extreme northwest side. इसलिए कहता हूँ मैप रखिए साथ में. नहीं, limitation means what? That is its own policy. China's own ancient civilization policy is fighting a civilization war. तो वो भी पावर, सुपर पावर है ना. अगेंस्ट कौन है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका अगेंस्ट है, यूरोप अगेंस्ट है, इंडिया अगेंस्ट है. लेकिन छोटे छोटे देश को वो, स्मॉल कंट्रीज को प्रोवाइड करा फाइनेंशियल असिस्टेंस. रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग हब. यूएस में जितनी द बिगेस्ट कंट्रीज इन यूएसए लाइक एप्पल, दे ऑल हैविंग मैन्युफैक्चरिंग हब इन चाइना. Right now it is responsibility of an, or you can say that it's onus on India to provide an alternative to the China. That so dependence of US on China will reduce, then only it can be done. You're getting the point? Okay, chaliye. In the Indian Ocean, right? So this is an recent development and concern for India, right? Now write down the next heading, that way forward for India. Way forward for India. Now what India can do to this situation? First, India wants to see a stable government, peaceful government, and prosperous government in Maldives. हो गए थे क्या? India wants to see a stable, peaceful, and prosperous government in Maldives. Stable, peaceful, and prosperous government in Maldives that meets the aspiration of its citizens. That the aspiration of its citizens. For this, India has, for this, India has, first point, get support from the international actors like EU and USA, from the international actors like European Union and USA, international actors like EU, European Union, USA, next, New Delhi is a worry of instability taking root in island. Delhi is in worry of instability taking root in island. Instability taking root in island nations where the radical Islamic State IS Indian is in worry of New Delhi. If you written that New Delhi does not mean that only Delhi is worry, not the Jammu and Kashmir or Himachal and Punjab. New Delhi is a capital of India, na? So whenever we are denoting with the capital, it means we are talking with the terms of whole country.
तो इंडिया या फिर इट्स द सेम थिंग कैन यूज. Is in worry of instability taking root in island nation where the radical Islamic State IS has been making inroad. Islamic State IS has been making inroads. Has been making inroads. Inroads. INROAD. Inroads. What is do you mean by radical? Fast. Vast. Radical. Kharab. Extreme. There are two terms, fundamental and fundamentalist. Fundamental means basic, and fundamentalist who only believe that the basic is true, no exceptions. So believer of this, that who has been radicalized, means who turned into the communalism. तो इस्लाम ISIS आपने ISIS सुना है आपने? Yes or no? Islamic State of Iraq and Syria, ISIS, who is responsible for all this recently. So they are basically they're establishing a foot in Maldives. Now this has also been happened just because of the government changes, military coup ho rahi hai, so they are been Islamic nations. Sometimes they favor them, so give space. Like Pakistan and Afghanistan, they gave space to the this Hizbul Mujahideens and all. Then this Osama, right? You are getting, so because of the changes in regime, so because of that they are also gaining hold or a foot or space in Maldives. अभी तक आईसीएस का इस रीजन में कंट्रोल नहीं है. दे आर नॉट इन ऑपरेटिव और एक्टिव, बेसिकली दे आर बीन इन दिस एरिया. एंड फ्रॉम हियर दे आर ऑपरेटिंग, इसलिए इसका नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आईसिस. नाउ दे हैव एक्सपैंडेड देयर बेस, दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर ओन गवर्नमेंट वहां पर. तो देखिए हमेशा वहां पे फाइट चल रही है इराक में बिटवीन इराकी गवर्नमेंट एंड आईसिस, राइट. दैट हैज आल्सो अफेक्टेड दिस लीबिया. लीबिया में भी देखिए दैट इज बीन आईसिस, थ्रू द आईसिस दे आर बीन फाइटिंग. African nations, northern African nations have also been affected. So they are getting a base in Maldives, which will hamper an India's interest. And that will be directly, now if they got a base in Maldives, it means they can use radicalizations in India also through religions. That will disturb the peace of India, a secular character of India. So ये भी एक concern है इंडिया का related to the Maldives. Is it clear? Right? Next point. So these are the certain points what we are writing under the India's position. Now next point, that Maldives is growing democracy. Maldives is growing democracy and is in the process of strengthening its institutions, and is in the process of strengthening its institutions and capacity building. Institutions and capacity building, which can visible in the Maldives, which can visibles in the Maldives policy. Institutions and capacity building, which can visible in the Maldives policies of India's first policy. Of India's first policy. Visible in the policies of India's first policy. ठीक है.
Next point, India should remain committed to assist. India should remain committed to assist the government and people of Maldives. India should remain committed to assist the government and people of Maldives in building the democratic nation. Clear? Next point, India needs to trade with extreme caution in this sensitive area. India needs to trade with extreme cautious in this sensitive area. Cautious, C-A-U-T-I-O-N, caution, C-A-U-T-I-O-N, सावधानी से, बहुत सावधानी के साथ. In this sensitive area, because the domestic issue in Maldives remains within the ambit of nation's internal affairs. Remains within the ambit of nation's internal affairs. Okay, so whatever the India is doing, that has to be done to the cautious, because it's Maldives internal matter to develop a peace. Is this clear? Doubt? Nahin? So this, sorry, Maldives is sensitive. We have seen how it is. IC is also getting control. Inside there is a much more turbulence. Hope is been sensitive issue also. So India should be practicing helping people, helping government to develop a stable, prosperous, आपने लिखा है, that democratic government with a cautious, because all these are an internal matter of the Maldives that cannot be interfered by the outside. Help them be an practicing with a cautious. सावधानी से काम करना होगा ना, ताकि अंदर का मामला है. So this is Maldives. Now we are moving awaited series, India and Pakistan. So there is no history of Pakistan before 1940. It is an Indian history. Okay? जो अपना history आप वो और आप and you know. So when was the first and the resolutions related to Pakistan was passed? Round Table Conference 1948, और उस तब पहली बार पाकिस्तान की बात बनी और पाकिस्तान बना 47 में. The question is, when was the time the resolution related to formation of Pakistan was passed by Muslim League? 1948. 1940 Muslim League has passed a resolution. Demand पहले से थी. Sorry, the demand was there, right? And the term was coined and everything has done. But the first time it was 1942 when the resolution was passed. तब आप देखिए Cripps mission came 1942. They rejected the idea of Pakistan. Then there was a cabinet mission, Wavell plan, 1945, 1946. So they also rejected the demand. We'll go through
TRIPS mission and cabinet mission of level plan when we will the history has been, you can say, rejected. But first resolution by official that now we want Pakistan. That is there was a इसकी टाइमिंग क्या खत्म होने वाली है शायद. Are you getting this? So 1940 was the resolution, and in 1947 it was dependent dominion. Yes, 1950 till 1956 Pakistan remained a dominion, and we have in 1949 after the enactment of constitution 1950 after commencement of constitution become republic sovereign, but Pakistan remained 1956 तक वो dominion status. Okay? So in 1947 there was a partition. Again, ये देखिए. Now this is a new, I mean after 1971 map. But in 1947 the India was bifurcated into two types, parts, west and east. So this is known as an East Pakistan, West Pakistan. And now the area which is known as a Bangladesh was known as an East Pakistan. That is here somewhere. And in 1971 the Pakistan got into bifurcation, और जिसकी वजह से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गए. All we have done. This is now in 19 after independence 1947 there is a war in 1948. वो कश्मीर का इशू होता हुआ आपको याद हो, Hari Singh, and they are delaying in the signing of accessions. इसी बीच Pakistani armies in a tribal, they in a tribal attire they enter into the Kashmir and they attacked. तो अब हरि सिंह को लगा कि Pakistan will annex. He sought an help from the Indian government, right? So there was an Iron Man, Patel साहब. He said we will help you, हम आपकी मदद करेंगे, but before that you have to sign an instrument of accession. Then signed an instrument of accession, and then there was an help sent by this what we can call Indian government. And then in 1948 there was a war. We enter in till Lahore. हम अंदर घुस चुके थे इनके यहाँ, and they have a control over this, right? Suddenly, as soon as we are going to get control of this part, ये देखिए ये जो आज है ना, this one, if you this an area under the control of Pakistan. This area, this is Kashmir, Jammu and Kashmir, Jaipur, Indian part. ठीक है, this is POK, Gilgit Baltistan. So in 1949 there was an UN resolution UN for the peace resolution. So UN has given a status quo यथास्थान कहाँ है वहीं पर. So at the time when the UN called for a peace, Pakistan was in the Kashmir. Since then, the control of Pakistan. First war in 1948, then second war in 1965. ठीक है. This leads to the 1966 Tashkent Agreement. Tashkent Agreement signed by
लाल बहादुर शास्त्री, और एग्रीमेंट साइन करते ही expired. Is that yes or no? Right. So this is the second war. So first war is ended with the UN intervention, the resolution. और इस resolution कहा गया that the plebiscite would be conducted in the Jammu and right. But to conduct a plebiscite, there is a conditions given. The condition is that the Pakistan army has to recede from the area, छोड़ना होगा, and the Indian army will be stationed in Jammu and Kashmir, right? And then only the plebiscite can be. अभी तक ये funny. Now the 370 has been abrogated. Second war 1965 by India, and after just a war of India and China, so Pakistan thought it's a good time to also get control of India. So 1965 में China ने Pakistan और India के बीच में, which leads to another resolution, that is Tashkent agreement between India and Pakistan. यहाँ भी हुई करेंगे ना all this. Then again the third war is 1970, which has helped the Mukti Bahini, Bangladesh, liberation of Bangladesh. And then there was an Shimla Conference agreement 1972. This war leads to another, that is a Shimla agreement. मैं इतना वेगली इसलिए बता रहा हूँ that you will come to study all this, the post independent related to relations, how this has been relation was established. If you go through this, you will come to understand that there is no cordial, peaceful, कोई भी मतलब एक friendly relations नहीं. There always been a continuous time period. There was a war happening, right? This leads to the Simla Conference agreement. Indira Gandhi was a period of this period. The conference में 90 or 99,000 were the war prisoners. That has been decided कि आपको interference नहीं हो. And by this Simla Conference, the line of control was again decided, was the Bangladesh was bifurcated. The Greek dispute and Greek, the line between border between India and Pakistan, that has 1970 again after the independence of Bangladesh had all again decided border. That has been done under the Shimla Conference. Now after this, there was a Gujarat Doctrine we have seen, right? So Gujarat, then there was a Gujarat Doctrine in around 98, 97, 98 दौरान में. And this Gujarat Doctrine leads to the Kargil War in 1990. से पहले वाजपेयी जी पाकिस्तान लाहौर गए थे. परवेज मुशर्रफ हैज डन अ मिलिट्री पाकिस्तान, तो उससे मिल करके आए थे. फ्रेंडशिप बस सेवा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम द पंजाब एरिया. बॉर्डर जो है आपका वो अटारी एंड बाघा बॉर्डर, बस सर्विसेज चली थी, फ्रेंडशिप बस. ठीक है. तो this Gujarat Doctrine, after this it leads to the 1999 Kargil War. In May, it was started in May. Okay. From March or April they have started capturing the Kargil, they entered into the Kargil, and in May the war was started and till it run till July. अभी हम विजय दिवस मनाते हैं ना, in terms of
कारगिल वॉर, ठीक. देन देयर वाज अ पीरियड ऑफ मनमोहन सिंह, वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट 2004 में खत्म होती है. द मनमोहन सिंह केम इनटू द पावर. मनमोहन सिंह also want to establish a good relations, but then there was an incident of 26/11 Mumbai attack. 26/11 मुंबई अटैक, ताज, इसमें CST में, ताज में, सब जगह वो 4-5 जो टेररिस्ट आए थे. So that has been done. So after Kargil, then there was a relations from 2004 to 2009. I mean, you can say that no such incidents was happened, but in 2009 there was a 26/11 incidents, Mumbai attack. Now the Manmohan Singh has says that the friendship talk and terrorism cannot go along with along. This has happened. So there was a, but still, and backdoor diplomacy was continue. क्रिकेट हो रही थी, ठीक है. इसी दौरान आपका देखिए वो वर्ल्ड कप होता है 2007 T20 वर्ल्ड कप, फर्स्ट टाइम. दिस इज द पीरियड. यस और नो? मुंबई अटैक से पहले, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ 2007 T20 वर्ल्ड कप. मुशर्रफ साहब आते हैं, धोनी की बाल की बड़ाई करते हैं. Remember that bilateral series and all this. So there is a back channel diplomacy was going on. वहाँ के एक्टर्स को यहाँ काम मिल रहा था. राहत फतेह अली खान was singing, फवाद खान was acting, Atif Aslam was singing. So this is a backdoor channel diplomacy. Government to government is not interacting, but sports is continuing on. This is going on. Keep liberal. Liberal. Okay. So art is separated from the state. So art should not come in the conflict. It means if you are a good singer and we are a good singer, so we should invite you, but in back there should be an attack on your home. That should be a liberal. तो वही तो मैं कह रहा हूँ. तो ये बैक डिप्लोमेसी चैनल चल रही थी और यहाँ ये हो रहा था. After 2009, when there was an attack, so Manmohan Singh said that the friendship and talk cannot be together, but still there is a backdoor diplomacy was continuing on. Then there was an incident of, उससे पहले incidents क्या था? Prime Minister Narendra Modi coming from the foreign tour suddenly led into Lahore to meet Nawaz Sharif. उसके शादी में या फिर ऐसे ही चले जाते हैं suddenly without any plan. And after that there was a Uri attack. 16, do you remember? इससे पहले incidents मनमोहन सिंह में, beheading of हेमराज, हेमराज के गर्दन काट दी जाती है वहां पर by the Pakistani armies. Then there was an attack on Uri. Now that leads to the top of a diplomatic relations between India and Pakistan. And due to the incidents of all these जो हमने अभी देखा है इसके ऊपर, so India and Pakistan relations is sometimes or always been considered as an discussions and dialogue, disruptions and dialogue relations. Sometimes they are continuing with the dialogue, then again there was a disruptions due to the all of these activities. So this disruptions will be curved, then again there will be a dialogue, then again disruptions, then again dialogue. So because of the historical perspective of background or its relations, so India and Pakistan relations were described as a dialogue, disruption, dialogue. Is this clear? Any doubt? ये historical perspective सब हम जानते हैं. इसमें ऐसा कोई भी incidents नहीं होगा जो मैंने नया बताया होगा. This is one neighbor who we all know very clearly. Clear, ठीक है? Now, so write down certain points related to this. Then under this we will discuss the 1960 Indus Water Treaty, right? Then we will discuss the border disputes related to this. Then we will discuss the CPEC. अब अगर आप देखें now if you see थोड़ा इसको और
how the China has been interfering, and when we have started our discussion on international relations, so we have discussed after the independence, the India has adopted a policy of NAM. ना ही हम रसिया ज्वाइन करेंगे, ना ही यूएस, बट द पाकिस्तान हैज ज्वाइन यूएसए। टीटो इसने ज्वाइन कर लिया, राइट, SEATO, which is a military or defense collective, South East Asia Treaty Organizations. It is an you can defense organization, collective defense like NATO. NATO is also collective defense. So SEATO is also a collective defense. It inclined towards the US, and US interest in Afghanistan had leads to the or giving a base to the US. तो अफगानिस्तान में इंटरेस्ट भी यूएस का था, राइट, वो हो गया. So because of this, it has developed relations, or it has, you can say, inclined or aligned with the US, and India follows the policies of non-aligned. We have also seen that during the initial period, Pakistan has opted for the military strengthening of the country, whereas India has opted for the economic development industries. So militarizations हो गया. Till 1956, as we know, it remains under the dominion. Means they do not have positions to form their own constitutions. On and off military coup होती रही, कभी मिलिट्री आ जाए, कभी डेमोक्रेसी आ जाए. So internally, Pakistan is also been suffering, going through a disturbance relations, which leads to the disputes with India. Or initially, the Pakistan has been having a disputes with India, and it is focusing more on to disturb India's relations. अभी वो यूएस के साथ, चाइना के साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा था. They do not focus on their own stability. They do not focus on their own growth, economic. Rather, they are focused on becoming a super military strength because of enmity with the India. ठीक है, right? Now, these are the certain provinces. अगर आप देख ले, Gilgit Baltistan. Now, this is Aksai Chin, which is under the control of China, and this is part of Jammu and Kashmir. Getting the point? अगर हम CPEC को देखते हैं, now if we see the CPEC, देखिए, dialogue disruptions and dialogue. We have seen how the dialogue, how it will be justified. अगर क्वेश्चन आता है, the relations between India and Pakistan is a series of dialogue disruptions, whole incidents starting from 1948 till today. Shimla Conference, Tashkent Conference, Lahore Conference, all has to be discussed. This is water indus bonded. Now this is Siachen. Now this is China-Pakistan corridor. ठीक है? If you see, this is the POK area. And this is the line of a China building, कास्कर से लेकर ग्वादर पोर्ट तक, BRI, under the BRI, Belt and Road Initiatives. This is passing through the POKs, एकदम boundary पर इंडिया का. This all comes under the BRI's initiatives. So this is the major challenge for India, and because of this, एक बहुत बड़ा portion है India. At the initial, China and was entering with the BRIs at POK. It is not something that it has end. It will affect the end. It will affect the beginning. So because of the importance of this, China are in positions that it should not be get control. India should not get control of POK. So we will also see the challenges to India.
द इम्पैक्ट ऑफ सीपैक ऑन इंडिया, सब हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो लेट्स राइट समथिंग, some introductions, right, to related to India Pakistan relation. तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, that 1947 Pakistan got independent, this all we know. We'll start with the 1948. So attack by the Pakistan in Kashmir in 1948. Pakistan attack on Kashmir in 1948. Sorry, हाँ लिखना है. Basically we are discussing this India Pakistan relation, dialogue, disruptions, dialogue. So we are starting with the Kashmiri. और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर, और कोई इशू नहीं, और वो रिजॉल्व होने के बाद पाकिस्तान के पास कुछ बचना नहीं है काम। अब क्या करें हम? केसर के लिए, a very tourist place known as an heaven, heaven on earth, अच्छा प्लेस है, माउंटेनियरिंग, और बेसिकली इनिशियली जम्मू कश्मीर, द किंग वाज नॉट इन इज इन डायलेमा, कभी वहाँ चले जाए, कभी यहाँ आ जाए, कभी यहाँ आ जाए। एंड जम्मू एंड कश्मीर इज इम्पोर्टेंट कनेक्टिंग चाइना एंड पाकिस्तान ऑल्सो डायरेक्टली, बड़ा स्पेस, लार्जेस्ट स्पेस। अगर पीओके चाइना पाकिस्तान के पास नहीं होता, चाइना वुड नॉट बीन इन कॉन्टैक्ट विद पाकिस्तान। द एरिया यहाँ पे ही कॉन्टैक्ट में है, पाकिस्तान की बाउंड्री यहीं, और चाइना जो है वो यहाँ से एंटर, काराकोरम पास, काराकोरम। हाँ ये देखिए, ये अफगानिस्तान है ना, ओके से लिंक है। अगर हमने ये कंट्रोल, हमने ये पीओके अगर हमने कंट्रोल में, नाउ इंडिया इज डायरेक्टली कंट्रोल विद अफगानिस्तान। नहीं, अफगानिस्तान ने वो मौका ही नहीं दिया। अफगानिस्तान इज इन फेवर ऑफ इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, because Pakistan base or land was used by the Americans or Europeans to get control of Afghanistan. तालिबान के अगेंस्ट में अफगानिस्तान को लैंड को, पाकिस्तान के लैंड को यूज किस लिए किया गया? एंटर इनटू द वेस्टर्न एशिया थ्रू अफगानिस्तान। मिनरल रिच कंट्रीज हैं ये सारे, पोटेंशियल है इनमें। ठीक है, तो वंस वी गेट दिस कंट्रोल, इट मींस इंडिया विल डायरेक्टली, एंड बिफोर 1948, बिफोर द UN resolution, India and Afghanistan sharing a very narrow boundary, but still there is a direct bond. Favor with India. India is because this can be shown this that when 370 was abrogated, okay, Pakistan was hoping that now until that period the Taliban has controlled Afghanistan. Taliban ने अफगानिस्तान में कंट्रोल कर लिया था 2019 तक, yes or no, right? Ashraf Ghani was thrown out his government, and or US ने retreat. Now this incident, that retreations of the US army and control of the Taliban was simultaneously. US वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि in 2001 when there was an attack of 9/11 World Trade Center पे जो attack, after 2001 US army was stationed in Afghanistan for almost 20 years, 2 decades, almost 2 decades. In 2019 they have retreated,
themselves. 1718 they have retreated themselves. And there was an establishment of Taliban government which was fighting against the US armies in Afghanistan. Okay? And Pakistan was helping Afghanistan, Taliban, and Taliban is a product of USA. Taliban was established by USA with the help of Pakistan to get control in Afghanistan. Now Taliban has established its own relationship, अपना government खुद बनाया अफगानिस्तान में. So now Pakistan hoping that Taliban will support Pakistan interest at Kashmir after abrogation of 370, but that not has happened. Afghanistan ने कहा this is an internal matter of it, and Taliban is claiming area in Afghanistan, Pakistan. आपको दिखाता हूं मैं. This FATA, Quetta, Baloch. This is considered a Khyber. This is considered that it is an Afghanis control, Afghan territories. तो अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे टेरिटरी पे कब्जा कर रखा है. And Afghans were favor in Russia, their support of India. ठीक है. Pakistan has been alienated on 370. किसी ने support किया नहीं because of India's position at the world order. Is it clear? And America interest is also this कि अगर जिस दिन इंडिया ने POK को अपने अंडर में ले लिया ना, then अमेरिका भी कुछ करेगा इंडिया. It will support because the acquisition of POK, India will fail the BRI, which ultimately going to help the US. तो लड़ना पड़ेगा ना. Do you know that in Lok Sabha there is 2 seats is reserved for this Muzaffarabad area? This is the area of POK, na? Sorry? तो वहाँ की सीट रिजर्व रहती है. We consider it a territory. एक सीट मुजफ्फराबाद के लिए भी रखी हुई है लोकसभा. हर साल हो जाती है unelected. हाँ, I always consider it as an POK as our own territory. It's an Indian territory which has been controlled by the Pakistan. Similarly, Upsc-Cse is an Indian territory, part of Kashmir, and under control of China. So East LAC, line of actual control. West LOC, line of ये वाला इलाका जो है ना, this is an territory, Pakistan area, and this is not under this Lama of. हाँ, इस्लामाबाद आपका, ये तो कैपिटल है पाकिस्तान. ये तो हो गए. नहीं वो ये यहाँ है इस्लामाबाद, नाम लिखा हुआ उतना नहीं. दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एरिया. देखिए यहाँ करके ना, हाँ वो थोड़ा सा पार्ट ले लिया. Any doubt? So now we are discussing this dialogue, disruptions and dialogue. So starting with the Kashmir attack. First, disruptions. So Pakistan attack on Kashmir in 1948.
And in 1949, with the intervention of UN, and in 1948, and in 1949, with the intervention of UN or mediation of UN, a ceasefire came into existence. A ceasefire, ASE, fire came into, and a part of Jammu and Kashmir, territorial part of Jammu and Kashmir, came into the control of Pakistan. Okay. हमने उन्हें भगा तो दिया था, समझे? When, जब तक अभी वॉर खत्म होने में 2 दिन बचा था, बट नेहरू हैज बिकम इम्पेशेंट, so he went to the UN कि प्लीज इंटरवेन. जैसे ही इंटरवेन की बात हुई तो स्टे लग गया. यूएन ने कह दिया ओके सीज फायर. सीज फायर मीन स्टेटस को, जहाँ है वहीं रुक जाओ. तब तक पाकिस्तान पीओके में था, वहीं रुक गया. हाँ, जाते तो शायद पीओके तक नहीं, वो हम अंदर भी घुस सकते. इंडिया नेवर लूज अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान. The cricket match they have lost, but not in a war. अरे मैच हारना इज डिफरेंट थिंग, बट द वॉर शुड नॉट, राइट? इट इज आवर नेचुरल एनिमी along with the natural. ज़्यादा फोकस पाकिस्तान के ऊपर करते हैं, that rather we should focusing more on China. China is a threat all its growth. पाकिस्तान is a military threat. और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, कभी कभी बीच में आकर लड़ सकता, बट मेजर इम्पैक्ट इंडिया ग्रोथ और डेवलपमेंट कैन बी डन द चाइना. इंडिया nuclear power or nuclear capacity of no first use. It has said that we will first, and Pakistan know that once he the nuclear 1999 वॉर के टाइम में द यूएस हैज इंटरवेंड. मैं आपको बताता हूँ. In 1999 द यूएस हैज इंटरवेंड ड्यूरिंग द वॉर. थे ना शायद उस समय प्रेसिडेंट थे शायद यूएस, शायद वही थे शायद 2001 में वो हुआ. सॉरी, हाँ, यूएस प्रेसिडेंट शायद. So he intervened and called Bajpayee ji, and he said, "और रोक दी पाकिस्तान." Clinton, okay, Clinton called and says, "He stop the war, otherwise Pakistan will use the threatening to use nuclear." तो वाजपेयी जी said कि मैं आधा हिंदुस्तान खोने को तैयार हूँ, but promise that the next day, द मतलब पाकिस्तान कल की सुबह नहीं देखेगा और नक्शे में नहीं होगा. So it means that India was always ready. They know कि अगर पाकिस्तान यूज भी करता है ना, तो that will more hamper to the पाकिस्तान. क्षति होंगी लाइक जापान, 1-2 शहरों में, बट पाकिस्तान पूरा खत्म. So that's why they are not using, or India's policy is not to use the nuclear weapon. It just has developed to for deterrence theory, कि डरा के रखना है, जिसके पास न्यूक्लियर वॉर हथियार होगी उसी के पास हमला नहीं होगा. Established a peace, it is necessary to have an
army, to have a strength. This is the reason why they are not used. Or India has never attacked any nations from the ancient time. India has never went to the expeditions or acquisitions, but India has defended its territory from the territory. Next point. So you have written that the due to interventions of UN, a ceasefire was called in 1949, and that period POK come under the control of Pakistan. Next point. In 1954, Pakistan joined CEATO, CEATO, Southeast Asia Treaty Organization. So SEATO. SEATO, that is Southeast Asia Treaty Organizations, which is a international organization for collective defense. Okay. Next point. In 1960, with the intervention of World Bank or mediation of World Bank, Indus Water Treaty was signed. ये इंसिडेंस कब की है? 1960, right? They were Prime Minister Jawaharlal Nehru. Next incidents, India-Pakistan war in 1965. India-Pakistan war in 1965. Which leads to the Tashkent Agreement in 1966. Which leads to Tashkent, Tashkent, Tashkent Agreement, 1966, where, or you can write according to this treaty, both sides give up territorial claim. Both sides gave up territorial claim. Give up territorial claims and withdrawn their armies from disputed territory. Territorial claim and withdrawn their armies from the disputed territory. From disputed territory. Sorry. Clear? Next. So this was in 1966, Tashkent operations. Now next incident is Bangladesh war in 1971. Central Asia, Uzbekistan. Uzbekistan में ना एक कर लीजिए, capital of Uzbekistan. हाँ, capital of Uzbekistan. The Tashkent in Central Asia. Have you ever wondered that the Central Asia's name is like Tashkent, Uzbekistan, then Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan? Why this? Any reasons? Why the name is like this? It's not because of religion. It's because of tribal. So in the Uzbekistan, Stan is for place. Stan, Kabristan, yeah. For the place, for the Kabr. So similarly, it's an Islamic word or Urdu. So similarly, a Stan for Uzbeks. Uzbek tribes, वो inhabitant
जहाँ पर उज्बेक्स रहते थे, तो दैट केम टू बी नोन एज एन उज्बेकिस्तान, अ प्लेस फॉर उज्बेक ट्राइब्स. टर्क, टर्किस्तान, a place for the Turks. किर्गिस्तान, स्थान, अरबी, ओरिजिन इज नॉट, हिंदी तो कोई शब्द ही नहीं है. बालूच, हाँ, दिस देयर बिन ऑफ द दिस ट्राइबल बालोच. हाँ, इट्स अ, व्हाई हिंदुस्तान नहीं, बिकॉज ऑफ द इंडस रिवर. इंडस रिवर, a river of Indus is a land of India which is a originator of Indus river. So, Indus का जो अपभ्रंश, that is Tang, is an Hindu. Thus Hindu, that is Hindustan, a land of. So those who born in India visit Hindustan. By political, I'm not talking about the religion. Political, जैसे इंग्लैंड में इंग्लिश बोलते हैं ना, यूरोपियन, irrespective of the nations wherever you born, are an European because you born in Europe. अब आप फ्रेंच भी हो सकते हैं, that is you are born in France. So under France now you can be an French Christian, French Muslim. So India, where if anyone born, so known as an Hindu because of the land belongs to them. Land of Indus Treaty because of this. Because Indus was a major source of river ancient for the transportation, for the agriculture purpose and all this. ऐसे तभी तो नाम पड़ा ना, Indus Valley civilizations. All the civilization in India was situated near the bank of Indus. ठीक है, तभी उसका नाम था इंडस वैली सिविल. और उसी इंडस का अपभ्रंश हो गया दस सिंधु. हाँ भाई, सिंधु हिंदी में सिंधु, हिंदू वही हो गया वो इंडस को. ठीक है, तो 1966 में हुआ. नेक्स्ट, द बांग्लादेश वॉर इन 1971, which leads to the Shimla Agreement in 1970, signed between India and Pakistan. Bangladesh War 1971. Bangladesh was liberated in 1970. Shimla Agreement. Bangladesh War 1971, which leads to the Shimla Agreement 1970. बांग्लादेश वॉर में कौन हारी थी? पाकिस्तान आर्मी, अराउंड 90,000 अप्रॉक्स और 99,000. They have surrendered front of Indian आर्मी. और ये बारिश के टाइम था, तो आइडिया था नहीं कि बांग्लादेश जो बारिश के टाइम में मैसी हो मार्शलैंड में बदल गया वो उसमें. तो this agreement was the losses of Pakistan in 1970, about that captive of Shimla Agreement 1972, signed between India and Pakistan. Write down the certain points related to the agreement. It designated the new line of control between the two countries. It designated the new line of control the two countries, which neither side it the conference designated a new line of control between two countries, which neither side alter unilaterally. SEEK, seek to alter unilaterally.
Unilaterally means alone, without the consent of other. No one can change unilaterally, and shall be respected by both sides without, and shall be respected by both sides, full stop, not without, full stop, both side. शिमला एग्रीमेंट यार पाकिस्तान के, वही कॉन्फ्रेंस एग्रीमेंट, वही पहले बात हुई, फिर उसके बाद एक ट्रीटी साइन हो गई, दैट इज एन एग्रीमेंट. जुल्फिकार अली भुट्टो और वो इंदिरा गांधी के बीच. नेक्स्ट पॉइंट अंडर द सिमला, दैट इट आल्सो कंटेन्स a mutual commitment to the peaceful resolutions. It also contains CONTAINS, contains a mutual commitment to the peaceful resolution of all issues, peaceful resolution of all issues through direct bilateral approach. Bilateral approach. Sorry. Commitment to the peaceful resolution of all issues through direct bilateral approach. मतलब बात करके हम आगे का सारे disputes को solve करेंगे. ठीक है? So we are writing this. Clear? So we'll continue in the next class. And by tomorrow it will be over. Yeah, Pakistan. हम इसमें सियाचिन देखेंगे. Operation मेघदूत was done for the Siachen. Articles related to newspaper. Oh.